Firstly, I'd like to welcome all our media friends for waiting. I'm sorry we had to spare off some of your very valuable time. तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ सारे ग्रुप की तरफ से। तो पहले मैं आपको इस चीज की इंसेप्शन का वजह बताता हूँ। जो एजुकेशन सेक्टर जो है पिछले हम देख रहे हैं कि क्या 1.5 साल से थोड़ा बड़ा बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है। बीट शिफ्टिंग ऑफ योर कैरिकुलम्स और या बीट शिफ्टिंग ऑफ द सेशंस फ्रॉम दिसंबर टू मार्च और उसके बाद जो नई पॉलिसीज जो आ रही हैं उसके साथ जो हमारी इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो एक बड़ा इशू बन रहा है। सो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हुए जिसमें चाहे ट्रेड के हवाले से हम बात करें, हमारे बुक सेलर्स के हवाले से बात करें, पब्लिशर्स के हवाले से बात करें, हमारे स्कूलों के हवाले से बात करें, तो हमने सबसे बात किया कि भाई आप बताएं कि बेस्ट वे क्या है। जिसमें विशन साहब हैं, सुहेल साहब हैं, हमारे पब्लिकेशन से वसीम साहब हैं या शकील साहब हैं, हिलाल साहब हैं, हम सारे सबसे बात की। आसमा जी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन को भी हमने ऑन बोर्ड लिया बिकॉज इनकी राय भी लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली जो असली जो इसका स्टेक होल्डर है जिसके लिए हम सारा ये मैदान या सारा ये जो वाजवान सजाते हैं वो हमारा बच्चा है, जो हमारे फ्यूचर का जामिन है, जिसकी हमने जमानत लेना हमारा अखलाकी और कौमी जो मिली फर्ज भी है। उस सूरत को हमने सोच के तो हमने सबसे कहा कि ये बड़ा हाई टाइम है कि कुछ जो डिसीजंस हुए हैं उसको विजिट करने के लिए हमें आपस में बैठना चाहिए। जिसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, एजुकेशन के सारे स्टेक होल्डर्स को एक बोर्ड पर लाया जाए, जिसकी वजह से हमने ये जम्मू कश्मीर एजुकेशन वेलफेयर अलायंस बनाया, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम के हमने पेरेंट्स को भी लिया, जो कि एक हरक्यूलियन टास्क था। आसमा जी को बीच में लाना भी बड़ा इशू है बिकॉज ऑलवेज दे आर एडवर्सरीज टू ईच अदर, बट क्योंकि कॉमन कॉज है, बच्चे का मसला है, उसके फ्यूचर का मसला है, हमारी के फ्यूचर का मसला है, तो इस मामले में हमने इकट्ठे बैठना ही बेहतर समझा। मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए प्रेस रिलीज के लिए डॉक्टर तौसीफ जो कि हमारे बड़े रिनाउंड एकेडमिशियन है, पीएचडी
news, more and more resources for the employment. And on the other hand, we are trying to X more than 10,000 families who are directly or indirectly involved in the publication and all. Point number four, in comparison with other union territories, because there is always a comparison between the union territories. In comparison with the other union territories like Delhi, Chandigarh, there are so much, there is no such procedure, because the private, whatever the order has been implemented, it is only implemented in the UT of Jammu and Kashmir and not in the other UTs as well. And the private books are widely being used and prescribed by the private schools, and the private publishers are growing day by day, because we all know that while we are using prescribing these published books, the authors which has a repute all across the country, all across the world, so every parent will love to have us to, like to have the authors and read their books for their kids as well. Point number five, recognizing the financial consideration, because when we talk about certain things, then the financial consideration has to be there. We emphasize that the cost of the set of the books per year is well within the affordable limit, translating to the mere 300 rupees per month. The investment in quality education is an investment in the future of our nation, and we should not compromise on the fundamental right to choose one's education path. We all are having huge stock of books. This is what publishers, the main point about the publishers is that we have a huge
कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। एनईपी ठीक है, लेकिन वी वेलकम एनईपी, उसमें कोई हमारा मतलब ये कोई स्टांस नहीं है कि मतलब एनईपी को हम अपोज कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट द कैरियर ऑफ अवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट द कैरियर ऑफ अवर चिल्ड्रन। क्या कल को ये चीज हम आगे बढ़ने के बजाय कहीं पीछे तो नहीं हो रहे हैं? यू हैव ए लुक, मतलब आप देख सकते हैं कि जो जेएनके स्टेट बोर्ड की बुक्स है उनका आप जो अगर आप मैथमेटिक्स उठाएंगे या उनका आप अगर साइंस उठाएंगे, मैथमेटिक्स का फॉर क्लास वन अगर हम उनका मैथमेटिक्स देखें तो देर दे वो पढ़ा रहे हैं 1 to 100। और आप सब हजरात को पता ही होगा कि आपके बच्चे भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो एलकेजी या यूकेजी में वो चीज पढ़ रहे हैं। देर दे टॉट लॉन्ग एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन, फार एंड नियर। तो ये चीजें फर्स्ट में क्या बच्चा पढ़ेगा? क्या बच्चा हमारा जो एलकेजी या यूकेजी में पढ़ रहा है, क्या वो प्रमोट होने की बजाय डिमोट तो नहीं हो रहा है? ये चीज हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। और इस चीज से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हुई थी पब्लिशिंग इंडस्ट्री से या बुक सेलिंग से, क्या वो लैप्स तो नहीं हो रही है? क्या हजारों लाखों तादाद में जो हमारे पास काम कर रहे थे या जिनकी फैमिलीज इन चीज से एसोसिएट थी, क्या वो सफर तो नहीं करेंगे इस चीज के लिए? तो हमारी यही गुजारिश है अलजी साहब से कि इस चीज पे एक जांच कमेटी बिठाई जाए और इसका अच्छे से अजाला किया जाए, इसका रिव्यू किया जाए और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए। तो कीप ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स है, इस बिजनेस के जो भी स्टेक होल्डर्स है, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनके साथ एक सलाह मशवरा करके जो भी फिर गवर्नमेंट का डिसीजन हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन एक बार इसका रिव्यू होना ही चाहिए। एंड नाउ सर ये लंबा हो
क्वालिटी एजुकेशन। अब मैं बताता हूँ बुक्स की हालत, प्राइवेट पब्लिशर के बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा साइंस की मैट्रिक की किताब जो बोर्ड पब्लिश करते हैं, और उसके बाद अब एस चांद की पब्लिशर जगजीत सिंह की साइंस की किताब देखो, हर आइटम को कितना एलोबोरेट किया गया है, और किस तरह से वो किताब जिस वक्त स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट की किस तरह से थ्रैशिंग हो जाती है, और एज कम्पेयर टू डैट जो वो बोर्ड की किताब पढ़ता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मैं कहता हूँ आई एम 90 ईयर्स ओल्ड, जब मैं स्कूल में पढ़ता था अर्थमेटिक अलहदा होती थी, ज्योमेट्री अलहदा होती थी, और साइंस में फिजिक्स की किताब अलहदा, केमिस्ट्री की किताब अलहदा, जोलॉजी की अलहदा होती थी, और कॉन्सेप्ट्स में इतनी एक्सरसाइज होती थी कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते। ये सारी चीजें इन्हें छोटी किताब में ढकते हैं, और हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं सुबह स्टूडेंट्स का। तो चलो अब हमने इतनी देर तक ये सह लिया, मगर ये अब एक्सट्रीम हो रहा है। एक्सट्रीम इस बात का हो रहा है कि दैट वी हैव स्टार्टेड फीलिंग, जिसको कहते हैं वी आर अगेंस्ट द वॉर। अब देखिए हद ये हो गया, उन्होंने ये भी लिखा है आपको कि हम नर्सरी लेवल की क्या की किताबें भी पब्लिश करेंगे। ये तो कम्युनिज्म इन इकोनॉमी तो हमने देखा था, वो तो ऑलरेडी फेल हो गया। अब ये कम्युनिज्म इन एजुकेशन करते हैं, दे आर लेवलिंग आवर स्कूल्स विद द गवर्नमेंट। एंड आई टेल यू वन थिंग, प्राइवेट स्कूल स्टैंड ऑन देयर मेरिट, प्राइवेट स्कूल स्टैंड ऑन देयर क्वालिटी, एंड क्वालिटी में कंपटीशन होता है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। दिस इज व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई वांट थ्रू दिस मीडियम टू गिव अ फीडबैक टू द गवर्नमेंट दैट उनकी पॉलिसीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनकी पॉलिसी है फेलिसिटेटिंग पीपल, उनकी पॉलिसी है रीचिंग एवरी इंडिविजुअल टू मेक हिम टू डू हिज वर्क इन अ बेटर वे सो दैट हिज लाइवलीहुड इंक्रीजेस। What are they doing on the ground? On the ground, the whole thing is reversed. You see, आप देखो on the policy ground they say create jobs, and on the ground they are already existing jobs are being created. इतने publishers हैं, इतने booksellers हैं, इतने इनके employees हैं, all of them are getting the employed. Is this consistent with their broader policies? आप देखिए और एक चीज जो भी और भी है, discriminatory application of rules. NOC जो है, एनओसी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एनओसीज आर मैंडेटरी फॉर ऑल। क्या गरीब लड़के के बच्चे को सेफ्टी नहीं चाहिए? ये सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही सेफ्टी चाहिए। दे आर कंसर्न ऑन, इट इज नॉट बिकॉज दे आर कंसर्न द सेफ्टी ऑफ द प्राइवेट, इट इज ओनली टू मेक अस मोर मिजरेबल। इफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज देयर दैट दे डोंट वांट प्राइवेट सेक्टर, दे लेट देम क्लोज इट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वी आर अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर वर्क फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। And present government is trying to encourage privatization, and what they are doing is the discourage. अब 62 schools हैं, एनओसी किसी किसी की कहीं रुक गई है। अगर उनकी एनओसी रुकने के लिए उनको डिएक्टिवेट किया जाता है, डिड दे सी दैट गवर्नमेंट स्कूलों में भी किसी की एनओसी नहीं है? अच्छा, लैंड कहते हैं लीज पर दे दो। कितने गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट लैंड पर हैं? क्या उन प्राइवेट लैंडों को उन्होंने लीज पर दिया? Why this discrimination is being done between the private and the? This discrimination should stop, and we want to give a feedback to the government that whatever they are really trying to help people, that is not on the ground exactly reverse of that. Let me hope that the government will. अच्छा, आर्मी गुडविल स्कूल को फैसिलिटी रिलीज हो गई, लेकिन मेरे स्कूल को रिलीज नहीं हो गई। Why? वो तो गवर्नमेंट लैंड पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पर अड़चने लाना इट इज नॉट। अभी चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज को कहा आई विल एंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो इफ इंडस्ट्रीज आर बीइंग आस्क्ड टू एंश्योर, अब मैं बताऊंगा ये करते हैं ना, ये क्या कहते हैं